mdcat के ये MCQs जो है वो डिफरेंट बोर्ड की बुक से लिए जाते हैं और इसलिए ताकि आपको मतलब एक वे आ जाए, या आप ये है कि डिफरेंट बोर्ड्स की बुक से MCQs किस तरह वहाँ पे बने हुए हैं ताकि आपके माइंड में एक आइडिया क्रिएट हो। तो उस हवाले से ये जो है हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें तकरीबन हमने अभी तक के 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले के बाकी लेक्चर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मस्ट वॉच द वीडियो। और 5वां नहीं बल्कि 6ठा लेक्चर है, 5वां अपलोड कर चुके हैं, 6ठा है। जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 लिखना था, 5 लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो पहले वाले चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के लिए आपने प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको होगा पाकिस्तान MCQs फ्रॉम ऑल बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये प्लेलिस्ट का नाम होगा, इसमें आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो वो भी आपने जाके ज़रूर चेकआउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मैं आपसे सिर्फ MCQs शेयर करूंगा, इनका जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी और उसकी डिटेल्स मैं लास्ट में शेयर कर दूँगा। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे MCQ प्रैक्टिस होता है, MCQs जो है डिस्कशन होती है, तो वो भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये PDF की फॉर्म में है, तो हम इसको PDF फॉर्म में डिस्कस करेंगे और तकरीबन अबाउट आप कह लें कि 50 से 60 MCQs हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनको ज़रूर चेकआउट करना है। पोटेंशियल MCQs हैं और फेसबुक ग्रुप का नाम है Nmdcat प्रिपरेशन 2022। तो स्टार्ट करते हैं। जो टीम KPK के MCQs हैं वो हमारे पास, विच टाइप ऑफ मोशन इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, सो दैट इज़ 2D मोशन, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर इसमें 3D लगा देंगे, तो ये आपने नहीं लगाना, मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपने 2D लगाना है, ठीक है। और द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड एज ट्राजेक्ट्री। आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन नेगलेट्स ऑल ऑफ दीज, यानी उसमें रेजिस्टेंस, विंड स्पीड, स्पिन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये कुछ भी नहीं होता। द साइंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ कॉल्ड एज बैलिस्टिक्स। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो कोई भी उसका वो एंगल कोई भी हो, लेकिन अगर सम 90 आ रहा हो तो उसका रेंज सेम होगी, उसकी रेंज सेम होगी, लाइक 60 30 70 20, ठीक है। To improve the jumping record, a longer jump should jump at an angle of 45 degree. Velocity of projectile is maximum, height is minimum. Projectile is launched at the angle of, अब देखिए यहाँ पे जीरो भी है, जीरो नहीं होती, मिनिमम हो जाती है, तो ये आपने याद रखना है। Projectile is launched at an angle of 45 degree in horizontal direction with the kinetic energy E. Assuming no resistance, what is the kinetic energy of the projectile at highest point? So that is 0.5 E. A hunter aiming at a bird should aim a little above the bird, क्योंकि जो है प्रोजेक्टाइल की वजह से वो जो है वो जब ऊपर निशाना करेगा तो वो नीचे जाके गिरेगा। इसी तरह जब भी शूट करते हैं ना, तो आपने अपने टारगेट से थोड़ा सा अपना जो एम करना है वो थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि आप जो एग्जैक्ट टारगेट पे जाके लगे। An aeroplane moving horizontally with a speed of 720 km/h, the bomb that would be falls to earth behind aeroplane. The speed of projectile at maximum height is half of its initial speed. The angle is 60 degree. When a projectile is the highest point, the direction of velocity and acceleration is always perpendicular, which the following statement is not true for projectile motion. So that is Vy is equal to constant, Vx constant होता है, not Vy. टीम सिंध के MCQ देख लेते हैं। बॉडी ऑफ मास अमिट ऑन अपवर्ड एनर्जी के द हाइट एट विच पोटेंशियल एनर्जी वुड बिकम हाफ वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज V2/G, V square over G. Two balls projected 30 and 60 with the same initial velocity. The ratio of their maximum height is 1:3. If projectile is thrown with a 119.6 velocity meter per second velocity at an angle 30 degree with the x-axis time taken to reach highest point, so that is 1 second. If r is equal to 4√3, okay, जो है इसके अलावा h where r is the range of projectile and h is the height of projectile, the angle of projection would be, so that is 30. What should be the angle of projection? So the horizontal range is equal to maximum range, that is tan - 4 जो कि 76 डिग्री होता है. 4 projectile fired with the same velocity is at angle 25 degree 40 angle 45 degree 40 55 degree and 70 degree with the horizontal range of projectile would be largest for one projected angle, so that is 55 degree. ठीक है. उसके बाद two projectile fired at different angles with the same magnitude of velocity of such that they have the same range at what angle they might have been projected, so that is 25 and 65 degree. A passenger traveling in a train moving with constant velocity drops a stone from the window to the passenger. The path of projectile will appear to be, so that is straight line. A stone tied to the end of a 10-meter string is filled in a horizontal circle. If centripetal acceleration 10 meter per second square, its linear speed in meter per second is, so that is 10 meter per second. An aeroplane flying horizontally at a height of 500 meter with a speed of 360 km per hour, a bag containing ration is to be dropped to the jawans on the ground. At what horizontal distance from them should be bag released so that falls directly over them, so that is
1000 meter. The maximum range of a gun on horizontal terrain is about 16 km. With G is 10. What would be the muzzle velocity of the shell? So that is 400 meter per second. A man projected a coin upward from the gate of a uniformly moving train. The path of the coin for the man will be, so that is vertical straight line. Which the following is not true regarding projectile motion? So that is horizontal velocity of projectile is constant. हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट नहीं होता, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉलोइंग इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू वो ठीक है, बाकी गलत हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है, वर्टिकल कांस्टेंट नहीं होता। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हेन हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज द ग्रेटेस्ट? सो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। Two projectile A and B thrown with the same speed but angle of 40-50 degree with the horizontal. Which projectile will fall earlier? So that is B. A ball is thrown upward and is returned to the ground describing a parabolic path. Which of the following has the same value as that of throw and the time of return? So that is kinetic energy of the ball. Two bullets are fired horizontally with different velocities from the same height. Which will reach the ground first? So that is both reach simultaneously. Team Punjab, at which point of projectile kinetic energy is completely converted into potential energy? So that is not at any point, but completely convert नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बहुत रह भी जाता है। A projectile is projected at angle of 30 degree with initial velocity 30 meter per second, then what will be the time of flight? So that is 3 seconds. उसके बाद vertical height and horizontal range will be equal if the angle is, so that is all of these नहीं, so आंसर इसका होगा 76 डिग्री, जो मैंने आपको बताया 10-4। In projectile motion velocity is maximum at both इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे जीरो हो जाता है, जीरो तो नहीं तो मिनिमम हो जाता है। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ बॉडी मूव्स अप with which component of velocity? So that is y component. Angle between vy and gravity in second half is projectile motion, so that is 0 degree, ठीक है। टीम फेडरल बोर्ड की बुक से MCQs and object is projected with a 10 meter per second angle of 60 degree with the horizontal range will be, so that is you can say that about √3, C option. During projectile motion the horizontal component of velocity is none. ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा है, वो ना इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, जीरो भी नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑल ऑफ दीज, मिनिमम एट हाइट, मैक्सिमम एट प्रोजेक्शन लेवल एंड मैक्सिमम बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। At highest point of projection, the angle between velocity and acceleration is, that is 90 degree. A ball is thrown with the velocity of making the angle with horizontal. What will be the velocity at highest point? So that is 3 meter per second. Range of projectile is maximum for, so that is if we talk about the range, then it is maximum for you can say 38 degree. Two projectile of the same mass and with the same velocity are thrown at an angle of 60 degree and 30 with the horizontal, then which will remain same? So that is all of them remain same, means you can say time of flight, range of projectile, maximum height, ये सब जो है वो remain same. A body is thrown with the velocity of its maximum height, that is answer B, 0.8 मीटर। थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करा है तो ये आपको फेसबुक ग्रुप मिल रहा है, ये आपने ज्वाइन कर लेना है। इसमें अबाउट 47,000 स्टूडेंट हैं और आपको एक अच्छा डिस्कशन ग्रुप मिल जाता है, यहाँ पे आप MCQ डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं ये सारी की सारी यहाँ पे आपको ग्रुप में मिल जाती हैं, और ये सारा जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलता है, ठीक है। बच्चों ने टैग लगाए होते हैं साथ में कि टीम KPK, टीम फेडरल, तो आपको वो MCQ मिल जाते हैं। और इस तरह बहुत सारे MCQ, अब ये PDF में तो कुछ ही कंपाइल किए जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप का बेनिफिट ये है कि बहुत सारे MCQ अपलोड किए जाते हैं, साथ में डिस्कशन भी होती है कमेंट्स में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें 6 डेज जो है वो स्टडी होती है, और जो 7 डे होता है दैट इज़ यू कैन से जो इसमें जो है फन डे होता है, यानी फ़न का दिन होता है, उसमें फ़न किया जाता है। अदरवाइज़ बाकी 6 डेज़ में जो है वो बच्चे बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, तो एक अच्छा है वो इन्वायरमेंट है कि स्टडी और पढ़ाई दोनों, मतलब स्टडी और फ़न दोनों होने चाहिए, सिर्फ स्टडी भी वो होने सही नहीं है, ठीक है। सो मस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप, और आप फेसबुक पे इसको सर्च करेंगे आपको प्रोफाइल वगैरह मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करें। बाकी जितने मैंने MCQ शेयर किए हैं सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सो कोई वो वाली बात नहीं है कि आपके MCQ आपको कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कोई कमेंट वगैरह है तो मैं वो चेक कर लेता हूँ। सो देयर इज़ नो कमेंट एंड थैंक यू सो मच।